7.4 Question number 1. If NC8 is equal to NC2, find NC2. Given NC8 is equal to NC2, or this can be written as NC8 is equal to NC n minus 2. As you know that NCR is equal to NC n minus R. So by this formula we have changed it. NC2 we can write NC n minus 2. Since index is the same, therefore 8 is equal to n minus 2. So this implies that 8 is equal to n minus 2. It means n is equal to 10. So this is the value of n. N is equal to 10. Now you have to find the NC2. The NC2 and NC2 means 10C2. N is equal to 10. By formula factorial 10 upon factorial 2 factorial 10 minus 2. So if you are solving, so then you get the 10 into 9 factorial 8 upon 2 into factorial 8. Factorial 8 it can be cancelled. 2 5 ja, that is 45. Since NCR is equal to factorial n upon factorial r factorial n minus r. So this is the formula. Now the question number 2. Determine if 2nc3 is to nc2 is equal to 12:1. ओके, मीन्स हमको फाइंड करना है n की वैल्यू. तो फर्स्ट पार्ट 2nc3 इज टू nc2 इज इक्वल टू 12:1. तो यहाँ पे nc2 नहीं बल्कि nc3 होगा. ओके, तो ओपन दिस कैन बी रिटन एज factorial 2n upon factorial 3 factorial 2n minus 3 divided by factorial n factorial 2 factorial n minus 2 is equal to 12 upon 1. This will be equal to the here 2n minus 3. तो then you have to change it this. It means 2n को बाहर करेंगे, फिर 2n minus 1 को बाहर करेंगे और 2n minus 2 को बाहर करेंगे. तो बचेगा क्या? फैक्टोरियल 2n minus 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n minus 3 होल इज डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n है और यहाँ पे n minus 2 है. तो n को भी बाहर करेंगे, यहाँ से n बाहर किया, फिर n minus 1 बाहर किया, तो फैक्टोरियल n minus 2 आएगा, एक कम होता जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n minus 2 और दिस इज इक्वल टू द 12 upon 1. तो n minus 2 and n minus 2 can be cancelled. Factorial 2n minus 3 and factorial 2n minus 3 is cancelled. Now we will change it. 2n minus 1, that is 2 is the common, it means n minus 1 divided by factorial 3 into 2 multiplied by factorial 2, that is 2 divided by n into n minus 1 is equal to 12 upon 1. This is the 12 upon 1. So from here n can be cancelled, n minus 1 can be cancelled, 2 can be cancelled, that will be the 2n minus 1 multiplied by 2. So this will be equal to the 4n minus 2 upon 3 is equal to 12 upon 1. This will be equal to the 4n minus 2 is equal to
is equal to 36 is equal to 36 2 to the 4 तो अच्छा यहाँ पे बचेगा तो यानी कि 8 हो जाएगा 8 n माइनस 4 8 n माइनस 4 2 to the 4 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8n माइनस 4 8n माइनस 4 करेक्टेड तो 8n माइनस 4 is equal to 36 or 8n is equal to 36 plus 4 it means 8n is equal to 40 therefore n is equal to 40 upon 8 that is 5 so n is equal to 5 n is equal to 5 this is the answer of first part. Now we have to find the second part. So second part, this is the first part. Second part 2n c3 divided by n c3 is equal to 11 upon 1. So again open this factorial 2n upon factorial 3 factorial 2n minus 3 divided by factorial n factorial 3 factorial n minus 3 is equal to 11 upon 1. This will be equal to the 2n बाहर करेंगे फिर 2n माइनस 1 बाहर करेंगे 2n माइनस 2 बाहर करेंगे तब फैक्टोरियल के अंदर 2n माइनस 3 आएगा अपॉन यहाँ पे फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 दैट इज फैक्टोरियल 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाई n को बाहर करेंगे n माइनस 1 बाहर होगा n माइनस 2 बाहर होगा यानी कटेगा तो n माइनस 3 आ जाएगा n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 and factorial n minus 3 is equal to 11 upon 1. This is the 11 upon 1. This equal to the 3 to the 6, 3 to the 6 can be cancelled and n minus 2 not 2n minus 3 factorial 2n minus 3 is cancelled factorial n minus 3 is cancelled n minus 1 is cancelled so then we will multiply by 2 here तो बचा क्या यहाँ पे n बच रहा n भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे n माइनस 2 बच रहा तो यानी 2 टू जा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस 4 2 टू जा 4 टू जा 8n माइनस 4 यहाँ पे सभी कैंसिल हो जाएंगे डिवाइडेड बाई क्या बचेगा यहाँ पे n माइनस 2 बच रहा है n माइनस 2 तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22 तो 8n माइनस 11n is equal to minus 22 plus 4. This will be equal to the minus 18 and this is the minus 3n. Minus minus can be cancelled therefore n is equal to 18 upon 3 that is 6. So n is equal to 6 is the answer. जब भी हम फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो 1 लेस होता जाता है 2n को बाहर किया तो 2n माइनस 1 आ जाएगा 2n माइनस 1 को बाहर किया 2n इंटू 2n माइनस 1 को बाहर किया तो फैक्टोरियल 2n माइनस 2 ले सकते हैं और 2n माइनस 2 बाहर कर लिए तो फैक्टोरियल 2n माइनस 3 ले सकते हैं तो इस तरह से 1 हमेशा लेस होता जाएगा और फिर इसको कैंसिल कर लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा n इक्वल टू 6. दिस इज द आंसर of the question number 2. Now question number
3. Question number 3. Question number 3. How many cards can be drawn through the 21 points on a circle? On a circle. How many cards can be drawn through 21 points on a circle? So question number 3, this is the answer. Question number 3. How many cards can be drawn through the 21 points on a circle? As you know, from 2 points on the circle, we can draw only one circle. तो there are the 21 points. तो 2 points से हम एक कार्ड ड्रा कर सकते हैं. तो 21 पॉइंट से कितना, तो 21c2. तो इट मीन्स कि देयर आर 21 points. So there are 21 points on the circumference of circle. Since one and only one card can be drawn by joining two distinct points. Therefore the required number of card given by 21c2. So then you can simplify it. 21c2, that is factorial 21 upon factorial 2 and factorial 21 minus 2. कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे? NCR is equal to factorial n upon factorial r factorial n minus r. So this will be equal to the 21 into 20 factorial 19, and here factorial 2 means 2, 21 minus 2, that is factorial 19. So factorial 19 can be cancelled. It means 2 10 ja, that is 210. This is the answer, 210. Now question number 4. In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected? Selected means combination from 5 boys and 4 girls. मतलब 5 boys है और 4 girls है. इसमें 3 boys और 3 girls का combination बनाना है. तो it means कि 3 boys can be selected from 5 boys by 5c3 ways, and 3 girls can be selected from 4 girls. So that will be the 4c3. Now the total number of way of selection is equal to, multiply कर देंगे, that I will get the result. So that is the answer कि there are 5 boys and 3 girls. There are 5 boys and 5 boys. There are the 5 boys and 3 girls. No, 5 boys and 4 girls. There are 5 boys and 4 girls, and 3 out of 5 boys, 3 out of 5 boys, and 3 out of 4 girls have to be
selected और ऐसे लिख सकते हैं कि three boys can be selected from 5 boys is equal to 5C3 which and 3 girls can be selected from 4 girls is equal to 4C3 which. Therefore number of ways of selection selection is equal to 5C3 into 4C3. We will simplify it. 5C3 means factorial 5 upon factorial 3 factorial 5 minus 3 multiplied by factorial 4 divided by factorial 3 and factorial 4 minus 3. So then we get the factorial 5, that is 5 into 4 into 3, okay, factorial 3 divided by factorial 3 and factorial 2 multiplied by factorial 4 factorial 3 divided by factorial 3 into factorial 1. Factorial 3 we can be cancelled, factorial 3 we can be cancelled, and 2, this is the 2, so 2 to the 4, 5 to the 10, 10 4 the 40, 10 4 the 40, so this is the 40, so this is the answer. 5 बॉयज हैं और 3 बॉयज का सिलेक्शन करना है, तो 3 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज इज 5C3 वेज एंड 3 गर्ल्स हैं, तो कितने गर्ल्स में, 4 गर्ल्स में, तो 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स 4C3 वेज. देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन निकाल लेंगे. यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5C3 इंटू 4C3, सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी गेट द रिजल्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red ball, 5 white ball, 5 blue ball if each selection consists of 3 balls of each color. तो solution, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द 9 balls, मतलब 9 balls को हमको सिलेक्ट करना है. कितने से, 6 रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल है और एंड 5 ब्लू बॉल है और सब में से 3 लेना है. तो यानी हम रेड बॉल, 6 रेड बॉल से कितने बॉल का सिलेक्शन करना है, 3 बॉल्स का. तो 3 रेड बॉल्स कैन बी selected from 6 red ball is equal to 6C3 wedge, 6-3 wedge. Similarly 3 white balls can be selected from 5 white balls is equal to 5C3 wedge. Similarly 5 blue balls, तो यानी कि 3 blue balls can be selected from 5 blue balls is equal to 5C3 wedge. Therefore total number of wedge of selection of 9 balls is equal to 6C3
तो 6c3 multiplied by 5c3 multiplied by 5c3, and this will be equal to the 6 3 means factorial 6 upon factorial 3 6 minus 3 into factorial 5 factorial 3 factorial 5 minus 3 and multiplied by factorial 5 factorial 3 factorial 5 minus 3. It means factorial 6, so we can write it 6 into 5 into 4 into factorial 3, and here factorial 3 is written, and so factorial 6 means factorial 3 multiplied by factorial 5, so again you can change it factorial 5 into 4 into factorial 3. हम वो इस तरह से चेंज करते हैं जिससे ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए, फैक्टोरियल को इस तरह से चेंज करते हैं जिससे ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो जाए. तो यहाँ 5 तो अगर इसको चेंज करेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 आएगा, फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा. तो इस तरह से फैक्टोरियल 3 लिखेंगे यहाँ पे, फैक्टोरियल 3 मीन्स हो गया 3 इंटू और फैक्टोरियल 3 कैन बी कैंसिल, फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 इंटू 1 multiplied by factorial 5, it means 5 into 4 factorial 3 divided by factorial 3 into 5 minus 3, that is 2. So it means factorial 3 can be cancelled here, factorial 3 can be cancelled here, and factorial 3 can be cancelled here, and this factorial 3 we can write it 6 into 5 into 4, 6 into 5 into 4 multiplied by 5 into 2 to जा, तो 5 into 2 and 2 to जा, तो 5 into 2 divided by factorial 3 means 3 into 2, so 2 can be cancelled and 3 to जा, that will be the 2 5 जा 10, 40 45 जा 200 200 जा 400 5 जा 20, 5 2 जा 10, 50 54 जा 200 5 जा 1000 2 जा 2000. So this is the 2000. That will be the solution of the question number 5. That is the solution of the question number 5. The question number 6. Determine the number of the 5 card combination out of deck of 52 cards. If there is exactly one ace in each combination. Okay. तो हमें 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें 1 कार्ड एस ज़रूर होना चाहिए, 1 एस होना चाहिए. तो 1 एस होना चाहिए, तो 4 क्या होना चाहिए, नॉन एस होना चाहिए. तो 1 ace can be selected from 4 ace by 4 C1 ways, and 4 non ace can be selected from 48 card, क्योंकि दोनों मिलाकर के 52 होता है, तो 4 ace होगा और 48 क्या बनेगा, नॉन एस होगा. तो नॉन एस का सिलेक्शन बाई 48 C4 होगा और एस का सिलेक्शन बाई 4 C1 होगा. तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर वे ऑफ सिलेक्शन जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, 4 C1 इंटू 48 C4. तो इन द सेम वे solution, there are 4 ace and 48 other cards, जिसको हम बोल सकते हैं नॉन एस in a deck of 52 cards. We have to select one ace out of 4 ace,
4 ace and 4 other cards out of 48 cards 48 other cards. Therefore we can write here कि one ace can be select from 4 ace by 4c1 wedge and 4 non-ace can be select from 48 non-ace by 48 c4 wedge. Therefore number of wedge of selection we can write here 4c1 into 48c4. 4c1 that is we can write nc1 that is 1, or you can simplify, that is the factorial 4 upon factorial 1 factorial 4 minus 1, that is the 48. So 48 means we can write here factorial 48 divided by factorial 4 factorial 48 minus 4, and if we simplify it, so then you get the 4 into factorial 3 divided by factorial 3 into 48 into 47 into 46 into 45 into factorial 44 divide by 4 into 3 into 2 into 1 and into factorial 44. So factorial 44 can be cancelled, 4 can be cancelled, factorial 3 can be cancelled, 3 to the 6 से कट सकता है 6 8 जा 48. We get the 8 into 47 into 46 into 45. If we multiply, then we get 778,320. This is the answer, 778,320. This is the answer. Question number 8. In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can be bowled, if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers? Okay, so there are the 17 players in which the 5 players can bowls. Okay, so 5 players are the bowlers and we have to select the exactly 4 bowlers. The 4 bowlers can be selected from 5 bowlers by 5c4 wedge, and there will be the 11. तो 4 बॉलर्स यानी कि बैट्समैन कितने होंगे, 7 होंगे. अब टोटल कितने इसमें 17 है, तो 17 में 5 प्लेयर हैं, क्या हैं, बॉलर्स हैं. अब उस बॉलर्स में 5 बॉलर्स में 4 बॉलर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो रिमेनिंग कितने होंगे 12 से कितने का सेलेक्ट करना है 7. तो इट मीन्स 12c7 इंटू 5c4. ओके, तो इस तरह से कर सकते हैं. तो दैट इज सॉल्यूशन. देयर आर द 5 बॉलर्स, देयर आर 5 बॉलर्स and 12 other bowlers, other players in a team of
17 players. In a team of players 17 players. तो four ballers can be selected from 5 ballers is equal to 5C4 वेज. तो 12 अदर्स है. अदर्स में कितने सेलेक्ट करने हैं? 7. एंड टोटल कितने होने चाहिए? 11 होने चाहिए. तो यानी कि 7 अदर प्लेयर्स, 7 अदर प्लेयर कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम 12 other player by 12C7 ways. Therefore, number of ways of selection is equal to 5C4 into 12C7. That is 5C4 means factorial 5, factorial 4 and factorial 5 minus 4, and similarly factorial 12, factorial 7, factorial 12 minus 7. If you simplify it, then you get the 5 into factorial 4 by factorial 4. So factorial 4 can be cancelled. Factorial 1 is equal to 1 into factorial 12. तो 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into factorial 7 divided by factorial 7 and factorial 5. तो factorial 5 can be written as 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Factorial 7 can be cancelled. 5 cancel. 4 3 is 12, 2 is 24. So 3 2 is 6. 4 3 is 12. 4 3 is 12. This 12 can be cancelled. 2 4 is 8. It means 11 into 10 into 9 into 4 into 4. So it means if we multiply, then we get 90, 9 9 ja 81, 8 into 10, 8 4 ja 11, 10 ja 110, and 110 multiplied by 9, 990, or 990 multiplied by 4, it means 3960. 3960. तो दिस इज द आंसर. यहाँ पे टोटल 17 प्लेयर्स हैं जिसमें 5 प्लेयर्स बॉलर्स हैं, और हमें जो टीम का जो सिलेक्शन करना है वो उसमें 4 बॉलर्स होने चाहिए और 11 का टीम बनाना है. 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है जिसमें 4 बॉलर्स होने चाहिए और 7 क्या होना चाहिए? नॉन बॉलर्स होना चाहिए. तो इट मीन्स कि 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर को अगर सेलेक्ट करेंगे तो बाई इट विल बी डन बाई 5C4 वेज, एंड नॉन बॉलर्स दैट इज द 7 प्लेयर्स, एंड 7 प्लेयर्स जो अदर प्लेयर होंगे वो कितने? 12 प्लेयर्स से हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि 12C7 वेज. इफ यू विल मल्टीप्लाई देन यू गेट दी 5C4 into 12C7. If we simplify then we get the 3960. Now question number 8. Question number 8. A bag contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which the 2 black and 3 red balls can be selected. So answer, a bag contains the 5 black and 6 red balls. 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which the 2 black. So there are the 5 black in which we have to select the 2 black, and there are the 6 red ball, we have to select the 3 red ball. So in this way
uh, two black ball, two black ball, two black ball, two black balls can be select from five black balls is equal to 5C2 wedge, and three red balls can be select from how much red ball? 6 red ball, from 6 red balls by 6C3 wedge. Therefore, number of wedge of selection, therefore number of wedge of selection is equal to 5C2 into 6C3. If we will simplify it, then you get the factorial 5 upon factorial 2 factorial 5 minus 2 multiplied by factorial 6 factorial 3 6 minus 3. It means we get the factorial 5 means 5 into 4 into factorial 3 divide by factorial 2 means 2 factorial 3, and here factorial 6, that is the 6 into 5 into 4 factorial 3 divide by factorial 3, and here we will also get the factorial 3. So factorial 3 can be cancelled. This factorial 3 and factorial 3 can be cancelled. 2 2 ja 4 and 3 2 ja 6, 5 4 ja 20, 22 ja 40, 45 ja 200. If you will simplify, so then you get the 200. So this is the answer, 200. Now question number 9. In how many ways can a students choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every students? In how many ways a students choose a program of 5 course? मतलब 5 कोर्स का सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 9, जिसमें क्या है कि आर अवेलेबल 9 कोर्स अवेलेबल है, 9 में 5 सिलेक्ट करना है, एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट, मतलब 2 कंपल्सरी है, तो 2 कंपल्सरी है, इनके 3 हम अलग ले सकते हैं. तो इस तरह से हमें जो सिलेक्ट करना हो 5 कोर्सेज सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 9. तो इट मीन्स आंसर कि देर आर 9 courses and number of courses to be selected are 5, in which 2 specific courses are compulsory. 3 courses out of remaining 7 courses have to be selected. इट मीन्स ये हुआ कि 9 कोर्स में 2 कोर्स तो फिक्स ही कि 2 कोर्स लेना ही है, यानी 7 कोर्स बचेगा, और 7 में कितने कोर्स लेना होंगे 3, तो यानी कि 3 कोर्स सिलेक्ट करना है. देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू 7C3, that is factorial 7 upon factorial 3 factorial 4. It means 7 into 6 into 5 into factorial 4, and here 3 into 2 factorial 3 मतलब 3 into 2 and factorial 4 can be cancelled. 3 2 ja 6, this can be cancelled, that is 7 5 ja 35. So this is the answer. So this is the answer of the question number
9.